Working with Rashmika, when you saw Rashmika, Yes. so you were like, yeah, she's such a big star, after working annual Yeah, and unfortunately, I did not have any scene with with Rashmika. Rashmika. Yeah, so I didn't really see her on set, but I've heard great things about her from the people on the set, and yeah, I would love to work with her also very soon. So like, did you pinch yourself the very first moment when you got a call from Pushpa, Yeah. or did you pinch yourself at the moment when you saw yourself on the big screen and people are screaming for Pushpa 2? I did not pinch myself when I got the call because I thought it's a prank call. To be very honest, the first title song of the film had released and I was shooting for something, and after the shoot I just made a quirky reel and I put it on Instagram, and it got viral. And cut to next day I got a call for Pushpa and I thought someone's actually playing a prank कि हाँ ठीक है कल reel डाली है तो आज call कर लेते हैं ऐसे. But then when we actually verified the information, it was actually someone from the director's team, and I was actually, I was like, is it happening for real? And हाँ थोड़ा सा कश्मकश था because till date people have, my audience has loved me and they've only seen me in prominent roles, be it via family, Arakshan, Ghayal, Parvarish. So I was like, okay, this is a special appearance, it's just going to be one scene. But then ultimately I realized it's Pushpa. It's a brand. Brand You know, itself. correct. One would be really stupid to say no to a film like that. So I was like, you know what? I'm gonna grab the opportunity, and I did it. And when I saw myself on screen, well, let's just say I looked beautiful. So after watching yourself, in Pushpa, Yeah. so what was that first moment that hit you? Yeah, what was that first call that you got? Who gave you that very first call? And you were like, उन्हें बताया कि नहीं किया you are being a part of Pushpa, because I was going through your Instagram, you just posted it 4 days ago that I Yes. am a part of Pushpa 2. Yes. So I think many of your audiences and your friends and family must have Yeah. told you very bad कि यार पता है कि नहीं you are going to be a part of Pushpa. हर किसी का सेम रिएक्शन था. In fact, a lot of people told me, people who very close to me, my life, my family, friends, are like, अरे हमें तो बता देती, हम तो well wishers हैं, you don't tell the world, we understand. I'm like, I did not want to tell anybody. My own grandmother did not know. She just knew that I'm traveling to Hyderabad for a project, but I did not tell her the name, nothing. I wanted to keep it under wraps because वैसे तो लोग बोलते हैं बताना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है and all of that, but I have a very different reason कि I think the work should speak for itself. So when I saw the film, I saw कि okay, that scene is there, despite dialogues cut हो गए, बाकी 2 scene नहीं रखे, but I was like नहीं, मेरे 4 close-ups भी हैं, मैं notice तो होंगी, now I can at least start telling people. क्योंकि कई बार बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि आप शूट तो बहुत करते हो लेकिन फाइनल फिल्म में कितना जा रहा है नहीं जा रहा है आपको पता नहीं है, तो आप पहले ही ढिंडोरे पीट दो और अगर वो फिल्म में नहीं है देन आपका it's just it makes you look stupid. So I wanted to watch the film and then surprise the audience with the same. And the very first moment when you saw Mr. Allu Arjun, Yeah. the icon star Allu Arjun. Yeah. So did you have flying, butterflies in your stomach here? Yeah, Allu Arjun suddenly is in front of me. क्या बोलूं? नहीं, ये आज तक नहीं हुआ है. And I think that's also because ये लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था जब मैं अमिताभ सर के साथ भी काम करने वाली थी कि तुम फंबल करोगी, तुम डायलॉग भूल जाओगी, ये वो. But I have a very different take when it comes to being on set, because when I'm on set I am not Aanchal. I am the character that I'm playing. And चाहे वो आरक्षण था उसमें मुनिया इज़ अमिताभ सर्स स्टूडेंट, तो कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर से तो डरेगी नहीं ना, मतलब जो कोचिंग क्लासेस ले रही है. एंड इवन इन पुष्पा आई एम प्लेइंग सौरभ सचदेवा's गर्लफ्रेंड स्लैश वाइफ. अभी 2 अलग अलग चीज़ें चल रही है क्योंकि कुछ लोग भाभी भी बोल रहे हैं. But let me just call myself his partner. So we are from Dubai. We're really this, high-end people, and we look down upon कि एक छोटा सा, smuggler types and everything. So why will I be flabbergasted? I had to have that attitude and arrogance in the film. So मैं उसी कैरेक्टर में थी, and Allu sir is so sweet. He's so humble. बल्कि जो डायलॉग नहीं रखा गया उसको करने के लिए उन्होंने मुझे गाइड किया कि you shouldn't sit like that, you should just lie down on the chair and then look at me like that and then say your dialogue, it will really make an impact. So despite वो dialogue थोड़ा demeaning था, but he took it in high spirits and he's like, say it properly, you will look good. And I think that is what makes him an icon star.
And working in the South film industry, Yeah. so you have been working in this Hindi film industry as well for a very long time, almost close to 18 years. 18 years. 18 years, if I'm not wrong. So, what is that difference you saw? You know, the moment you landed at Ramoji Film City, you were like, मुझे लगा था कि यार कुछ ऐसा माहौल होगा सेट के ऊपर, Yeah. you know, it completely change your perspective. So, was there any moment that changed your perspective out there? For me, I was being in Hyderabad in Ramoji City was like a kid starting her journey all over again. जो मैंने 18 साल पहले किया था with a cameo role in शानू की शादी, वही लड़की आज फिल्मों में फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है with a cameo special appearance. And वहाँ का तौर तरीका बहुत अलग है. But having said that, I will say it's all good because I was in awestruck with their professionalism, their humility, the kind of respect that they give you, the way they make you feel pampered and loved. It's just next level, and I think I would want to do it all over and over again. And as an actress, Yes. you know, every actor का एक homework होता है, या you know, every actor has got this habit, you know, to learn something from others. That is what an Correct. actual actor is all about. Correct. You know, learning something good from the others. So, as an actress, you know, learning something from the other actress, if Yes. you say. So, how was that, you know, working with Rashmika? You know, when you saw Rashmika, Yes. so you were like, "Yare, she's such a big star," you know, after working. And you Yeah, went- unfortunately, I did not have any scene with Rashmika. Rashmika. Yeah, so I didn't really see her on set, but I've heard great things about her from the people on the set, and yeah, I would love to work with her also very soon. Can you manifest this right now at this very moment? Do you Of believe in course, manifestation? I do believe in manifestations. I think manifestations has brought me here. Manifestation has actually given me Pushpa in a way. वो रील बनाकर मैंने डाली, मैंने कहा यार ये तो ब्लॉकबस्टर है, इस पे तो बनानी चाहिए. और cut to I was working in the film and being a part of it. So manifestation really plays an important role. And if I speak about your television industry, Yeah. journey, so you know, 18 years ago, things were quite very different, I think. Correct. In today's perspective, things were very different. So you worked as a child artist as well. So, Right. you know, slowly, gradually, you were playing that, you know, college kids wala shows and all, Kumra and Correct. everything. So how was that journey? You know how much TV industry has defined you, yeah, how much TV industry has changed you and shaped you in making your career? I don't know about the changes because I never took the technicalities of TV along with me. And बचपन से ही, you know, for me, fortunately, I was never stuck to one medium. It was never just TV for me. I was also doing films simultaneously because I was 11, 12 when I did VR Family. I was 14 when I did Arakshan. I think no, 12, 13 only, somewhere around that time. So it's never been about that one medium. I've never been कि अच्छा ये तो सिर्फ TV actor है. I've done so many ads. I did my first web show called Dil Buffering in 2017 जब इंडिया में web shows का ज़माना भी नहीं था. So, which is why I can't be defined on to or be limited to just one medium. But yes, of course, things have changed. टीवी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत लिमिटेड टाइम में आपको बहुत कुछ शूट करना होता है, लंबे लंबे डायलॉग्स याद करने होते हैं, ये भी करना है वो भी करना है. सो इफ़ यू टेल मी कि ओके टुमारो वी डूइंग अ फीचर फिल्म एंड वी हैव टू रैप इट अप इन 15 days एंड हमें एक दिन में 4 सीन करने हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आई एम दैट एक्टर दैट आई विल बी हैंड्स ऑन प्रिपेयर्ड कि येस आई कैन डू इट. एंड आई एम ऑल्सो दैट एक्टर हु इज़ बिन अ पार्ट ऑफ पुष्पा जहाँ पे हमने वो एक सीन जो आपने देखा है हमने वो 6-7 दिन अच्छे से इत्मीनान से शूट किया था. तो आप ये करवा लो या वो करवा लो, आई एम अप फॉर इट. And you know, after doing such a big, massive film, Yes. and opposite such a massive star, so you know, you have set a benchmark for yourself, right? Right. You know, being featured in a very big movie. So after a very big movie, when a movie gets success, and also actors always think कि मुझे जो अगली मूवी या अगला प्रोजेक्ट मिले तो वो ना उस बेंचमार्क मैंने जो सेट किया आई थिंक उसके आसपास ही होना चाहिए. यू शुडंट गो डाउन. Correct. Always see the upper side of the mountain. True. So are you expecting you know future roles कि यार अगर मुझे पुष्पा जैसी मूवी में रोल मिल सकता है तो you know any big production house या any big movie में आई थिंक अब मुझे मिलना चाहिए. The very first moment मुझे जो स्क्रिप्ट मिलेगी and I'll be like यार नहीं. So you know
get in the right. To be very honest, I do not have any inhibitions as an actor. Like I said, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था विद कैमियो रोल, मैंने ये नहीं सोचा था अब शन्नू की शादी दिव्या दत्ता के साथ काम ही कर लिया तो उसके बाद तो मैं सिर्फ श्वेता तिवारी और इनके साथ ही काम करूँगी. आई डेंट हैव दोज थॉट्स इन माई माइंड. उसके बाद मेरा नेक्स्ट शो था धूम मचाओ धूम, जो कि डिज्नी पे आता था विद यंगस्टर्स, और उसमें से कोई भी एक यंगस्टर वेल नोन नहीं था, बट आज उसमें से एक इंसान इज अ स्टार एंड दैट इज विक्रांत मस्सी. So it's a journey, we're all living, we're all defining a journey by actually working on it. तो I don't have any inhibitions कि अब पुष्पा के बाद तो मुझे सीधा सिर्फ KGF 3 ही करनी है. अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, I'll be very happy. But I'm an actor who wants to just be visible on screen. मुझे कैमरा से बहुत प्यार है और जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं ना, मुझे उससे प्यार है, तो उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ. And I can say this on camera that you are a Gen Z kid. Right. So people do say that nowadays Gen Zs are working really hard. Right. They know, like if I talk about the past generation, तो उनको exact पता नहीं था उन्हें करना क्या. But we as a Gen Z kids, we know right from our younger days. Correct. That's when we go out of the school, we are like कि मुझे ये करना है, we make a road. Correct. So but sometimes Gen Z kids को ये भी कहा जाता है रास्ते से भटक जाते हैं. So did you come across any such comments कि अरे यार अब छोटी सी उम्र है, 25-26 year of age, achieved so much. Yeah. So कभी ऐसा लगा कि यार I'm going on my right direction, या कभी किसी ने आके कुछ बोला यार तू बहुत चेंज हो गई है यार suddenly, as a Gen Z kid. Do you feel? To be very honest, I don't give anybody the access to come and tell me anything. I'm a very big introvert. And there's a thin line between being introvert and arrogant. I am not arrogant. I am an introvert. I don't entertain a lot of people in my life. बहुत limited friend circle है. Best friend भी एक ही है पिछले 14 साल से, तो I'm so consistent in my life. And apart from my mom, I don't listen to anybody. And that's not because she's my mother. She's also been in the business for over 20 years now. उनकी अपनी जर्नी रही है इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड लोग आके उनसे सलाह लेते हैं कि आप बताओ कि ये कैसे करें, वो कैसे करें. तो अब मेरे खुद के घर में मेरी माँ है जो कि इतनी अच्छी गाइड है, हु हैज़ द विजडम टू टेक मी टू ऑन द राइट पाथ. तो अगर कभी मुझे ऐसे लगता भी है where I'm feeling a little helpless, where I don't know what to do, how to go about it, so I just sit with her and I say, and she's not my mother when I'm talking to her about business. So I'm like, listen, I need to talk to you, guide me, and then she guides me thoroughly, and then I feel like, okay, now I've found my path. So yeah. So as you said, your mother is your guide, and I can Yes. say she's your mentor as well. Correct. Mothers are always the first mentor. Absolutely. So whenever you get a script or a project offer, so do you do the first thing, you go to Yeah. your mom and should I do this or not? Oh yeah, 100%. क्योंकि I don't have the knack of knowing कि will this script do well with the audience or not. कि मैं अंधी हूँ, और वो भी किसके लिए, कैमरा के लिए. मैं सिनेमा से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे हर स्क्रिप्ट अच्छी लगती है. मुझे लगता है हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी लोगों को अच्छा लगेगा. एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग इट राइट, पीपल विल लव मी. क्योंकि आज तक वैसा ही चला रहा है. परवरिश करने से पहले मैंने सोचा नहीं था अच्छा अपब्रिंगिंग पे बना रहे हैं, हिट होगा नहीं होगा. आई वाज लाइक लेट्स डू इट, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ इंडिया. तो आई डोंट थिंक एंड ponder over it so much, but yes, my mom has a knack for it, and a lot of films that came my way that she said no for, she's like you shouldn't be doing it. तो पहले तो मुझे गुस्सा आता था क्योंकि टीवी छोड़ दिया था, फिल्में करनी थी, तो वो जो एक छोटा सा गैप आया था, तो आई वाज लाइक यार मम्मा ने ऐसे कैसे मना कर दिया. शी इज लाइक द स्क्रिप्ट इज नॉट गुड. आई एम लाइक नो मॉम इट्स गुड. शी इज लाइक यू वांट टू डू इट, यू डू इट, देन डोंट आस्क मी. आई एम लाइक अच्छा नो आई वोंट डू इट. और फिर वो फिल्में रिलीज हुई, हमने फर्स्ट डे 9 PM शोज देखा और थिएटर में 5 लोग बैठे थे सिर्फ. And I looked at her and I thanked her. I said thank you for not making me do it. Thank you for stopping me. तो ऐसे एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, and which is why she is like any script that comes to me, I'm like hello, please guide. So yeah. So after working so many years, so nowadays there is बहुत सारी ऐसी अफवाह फैली हुई है मार्केट के अंदर. आजकल रोल्स मिलना, they don't see your talent. So they are just like favorism हो जाता है, partiality बीच में आ जाती है. So did you ever come across such things, because many actors have come out and spoke कि
मुझे I was signed for a project but suddenly just before 2 days shooting के पहले मुझे निकाल दिया कि just because कोई other actor producer का या you know casting director का favorite था and ज़्यादा limelight में आ गया था तो they were like कि इसको हटाओ इसको so did you ever come across such things in recent times? नेवर, नॉट रिसेंट एंड आई होप कभी हो भी ना, बिकॉज आप जब एक प्रोजेक्ट पे जाते हो आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हो, आपकी बहुत उम्मीदें होती हैं, आप अपना बहुत कुछ साइड पे छोड़ कर उस प्रोजेक्ट को देते हो, अपना टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग. And to be replaced like that, I can't even imagine what actors go through. But yes, I've heard about it. It is true. Fortunately for me, आज तक मैंने जितना भी काम किया है वो आगे से मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने ही बुलाकर या तो ऑडिशन लिया है और या तो डायरेक्टर्स चॉइस रही हूँ मैं कि द डायरेक्टर वांट्स टू कास्ट मी. तो अब जब डायरेक्टर खुद ही चाहता है तो आई थिंक देयर इज नोबडी अबव दैट. प्रोड्यूसर का तो काम सिर्फ पैसे लगाना. डोंट टेक ऑफेंस टू एनी प्रोड्यूसर इफ यू आर ऑल्सो इनटू कास्टिंग, बट yeah, so I have never been replaced and I feel empathy for people who've gone through it. And you know, as an actor, Yeah. so what is it one moment you are like when you're not doing projects and all, तो कभी कभार ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं, you know, when they do a film or a project and second project आने में थोड़ा सा you know time लग जाता है. Correct. People are used to see you, होता है ना वो आपको बार-बार देखते Correct. जाते हैं at a very बहुत शॉर्ट टाइम में you know very frequent interval they want to see on stage. So कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते या टाइम लग जाता है प्रोजेक्ट आने में. So लोग आगे कभी भी बोलते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है. नहीं ऐसे टॉन्टिंग नहीं, टॉन्टिंग वे में तो कोई नहीं. लाइक आई सेड, आई डोंट गिव एनीबडी दैट एक्सेस. आप जितना आप जैसी कंपनी रखोगे ना वही आपकी लाइफ वैसी रिवॉल्व होने लग जाती है. तो मेरी कंपनी में ही ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी मुझे टॉन्ट मार के बोले कि तेरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहा. येस, अ लॉट ऑफ माई वेल विशर्स who tend to ask me, bro, when are we seeing you next on screen? And it's a very positive way of asking. And I tell them if there's a project or I have done a lot of music videos in 2022 and 23. इतने पंजाबी भर भर के मैंने म्यूजिक वीडियोस किए. तो जब भी लोग मुझे YouTube पे देखते थे तो हमेशा खुश होकर यू नो बोलते थे कि यू वर लुकिंग ब्यूटिफुल. म्यूजिक वीडियो में उतना स्कोप नहीं होता है एक्टिंग का, तो मैक्स यही होता है कि हाँ बहुत सुंदर लग रहे थे, गाना बहुत अच्छा है, वेरी कैची. अब एक मैंने गाना किया था शिल्पा राव का, इट्स कॉल्ड परिंदे. इट वॉज सो मेलोडियस एंड सो नाइस कि पिछले साल 23 में पूरा साल लोगों ने सुन सुन के मुझे मैसेजेस किए हैं. तो हाँ, टॉन्ट तो आज तक किसी ने नहीं मारा क्योंकि मैं उतना अलाउ नहीं करती हूँ. इट्स ऑल अबाउट आप किसको कितनी परमिशन दो, वो सब मैटर करता है. And now coming to the one of the most important questions from a boy's perspective, I'm asking you. Okay. What is that first thing you know you see to a guy and have you ever got starstruck yaar you were like yaar what a guy. Let's straight away ask yaar कभी किसको देख के ऐसा लगा यार क्या लड़का है. मतलब did you had you know instant crush होता है love at first sight वाला. Did you had any of this encounter with someone? Yeah, not with like a normal guy, because okay, I'll be very honest, I'm not boasting or anything, but when you're a girl who's beautiful and a girl who's got her brains right, she knows what she wants in life, तो ambitious लड़कियां लोगों को बहुत पसंद आती हैं. तो I come across as someone who people very easily fall in love with. तो मुझे क्योंकि वो बचपन से इतना अटेंशन मिला है कि मुझे ना कभी किसी लड़के को देखकर वाव वाली फीलिंग आई नहीं है. बट कि वाओ ही इज अमेजिंग, ही इज गॉट ऑल दीज क्वालिटीज, नहीं. ऑफ कोर्स देयर आर लाइक बेसिक फ्यू थिंग्स दैट आई लुक इन अ गाय एंड दैट इज हिज ह्यूमिलिटी. वो बंदा कैसा है, रिस्पेक्टफुल है या नहीं, क्योंकि आई फील एनी बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप इज रिस्पेक्ट. प्यार व्यार फेड होता है, आता है जाता है चला जाता है, केयर भी आती जाती है, रिस्पेक्ट कभी नहीं आपको खोनी चाहिए. सो दैट्स वन थिंग आई लुक फॉर इन अ गाय, ही शुड बी रिस्पेक्टफुल. एंड अगर मैं सेलिब क्रश बोलूँ टिल फ्रॉम फर्स्ट डे टिल डेट, और मेरा जो हमेशा रहने वाला है वो है शाहिद कपूर, और वो कभी नहीं चेंज होने वाला है. द डे ही गॉट मैरिड आई क्राइड. शाहिद, इफ यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस यू शुड नो दिस. मैं आपको VR फैमिली के प्रीमियर पे बोल नहीं पाई. आई हैव दिस मैसिव क्रश ऑन यू. एंड मैं जब प्रीमियर पे थी तो उस दिन कैसा हुआ था ना कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि अच्छा मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग कर ली. मतलब सब लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे आके from who's who of the industry were there at the premiere and everybody's like you've done a great job. तो मैंने सबको thank you बस बोले ही जा रही थी. and I was by the time I was exhausted. 200 लोगों को thank you बोल के I
I sense a tap on my shoulder and I turn back and there's this man with a beard and he says, "Hey girl, you've done a fantastic job." And I say thank you and I turn back and I realize it's Shahid Kapoor from that Mausam wala look. And I'm like, oh my god, I started shivering. I turned back and I'm like, thank you, thank you, thank you, thank you. And he was like, I think he was taken aback कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने. But I'm sorry for scaring you if you're watching this again, but he's forever going to be my crush. And lastly, I'll ask you, every person का एक बहुत relaxed time होता है. जी. When you have a very hectic schedule, या पूरे दिन में do many things and all, like relax करना है. So what is that one thing you do? Do you Netflix and chill, or you like music is the best therapy for you? I think music and drive. I go on drives a lot and I love driving and listening to my kind of music while driving, it's the best therapy for me. As a kid, as a 90s kid, I would say. Yeah. So 90s kids have seen a huge transition, from Cartoon Network to Netflix. बहुत बड़ा transition देखा है लोगों ने. So what is that one thing you miss about your childhood, and now when you see when you see children out there now कि यार इन लोग ने तो किया ही नहीं जो हमने किया है. Correct. So what is that one thing you find missing in them कि यार हम लोग तो ये करते थे आज हम लोग करेंगे. I find missing and I fear also when I will have a kid कि how will I go about it, because I remember हमें तो खाना खाते हुए YouTube देखने की आदत ही नहीं थी. और अब आजकल मैं देखती हूँ कोई भी बच्चा बिना YouTube के खाना ही नहीं खाता, बिना TV के खाना ही नहीं खाता है. Till date, I go out on dates with my friends, my mother, my family, and we're all like having dinner together, and we don't touch our phone. तो वो तो मैं आजकल की जनरेशन में देखती नहीं हूँ. And I remember when I was a kid, despite I used to shoot, despite I used to go to my school, there was this fixed pattern कि 6 p.m. to 9 p.m. I used to go down and I play with my friends. Doesn't matter if it's a girl or a boy. मैं गिल्ली डंडा खेलती थी, मैं क्रिकेट खेलती थी, मैं हाइड एंड सीक खेलती थी. वो जो स्विंग्स होते हैं, I still remember I had fever and my mom was like, you're only allowed to go down for half an hour and you're going to come up. I said okay. I went. अचानक से कुछ तूफानी छाई और वो ना बहुत बड़ा स्विंग था, वो जो मंकी बार नहीं होता है, वहाँ पे मैं कुछ तो करते 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 ऊपर जाकर बैठ गई मंकी बार के ऊपर. And I'm just sitting and I'm like, oh shit, अब नीचे कैसे आऊँ? And my friends are just looking at me कि are you mad? Are you insane? And then I'm like, please go call my mother. I can't come down. And so the moment she came down, she's like, ये बुखार में ऐसे कर रही है, ये बड़े होकर क्या करेगी, आतंक बनने वाली है. But that was the beauty of it. आजकल के बच्चे तो 12 years old, 13 years old, they're on Instagram. मेरे को मैसेजेस आते हैं, दीदी आई एम योर फैन. मैं अगर उनका प्रोफाइल देखती हूँ तो महज 12 साल के होते हैं. आई एम लाइक, थैंक यू फॉर बीइंग माय फैन, पर इंस्टाग्राम छोड़ो यार. जीवन जियो अभी तो. नहीं, अगर मैं वो मैसेज उनको भेज दूंगी ना, पहली बात तो वो बच्चा है और टीनेज में एंटर कर रहा है, हार्मोन्स उसके वैसे ही पीक होंगे, तो पता नहीं वो ब्लॉक ना कर दे और 10 लोगों को बोलेगा तो बड़ी घमंडी है. तो इससे अच्छा कुछ मत बोलो, जस्ट बी क्वाइट. थैंक यू.